This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली अल्लाह मदद फरमा, अल वाहिदुल कहार, अली अल्लाह मदद फरमा। हक अली बर हक अली शाहे विलायत अली। हक अली बर हक अली शाहे विलायत अली। शाहे विलायत अली नूरे हिदायत अली। ऐ नूरे चश्मे आशिकान अल्लाहु मौलाना अली। ए रहनुमाए मोमिनान अल्लाहु मौलाना अली। अल्लाहु मौलाना अली। अल्लाहु मौलाना अली। हक अली बर हक अली शाहे विलायत अली। शाहे विलायत अली नूरे हिदायत अली। ऐ नूरे चश्मे आशिकान अल्लाहु मौलाना अली। ऐ रहनुमाए मोमिनान अल्लाहु मौलाना अली। अल्लाहु मौलाना अली। अल्लाहु मौलाना अली। हक अली बर हक अली शाहे विलायत अली। शाहे विलायत अली नूरे हिदायत अली। ऐ नूरे चश्मे आशिकान अल्लाहु मौलाना अली। ऐ रहनुमाए मोमिनान अल्लाहु मौलाना अली। अल्लाहु मौलाना अली। अल्लाहु मौलाना अली। हक अली बर हक अली शाहे विलायत अली। शाहे विलायत अली नूरे हिदायत अली। ऐ नूरे चश्मे आशिकान अल्लाहु मौलाना अली। ऐ रहनुमाए मोमिनान अल्लाहु मौलाना अली। अल्लाहु मौलाना अली। अल्लाहु मौलाना अली। हक अली बर हक अली शाहे विलायत अली। शाहे विलायत अली नूरे हिदायत अली। ऐ नूरे चश्मे आशिकान अल्लाहु मौलाना अली। ऐ रहनुमाए मोमिनान अल्लाहु मौलाना अली।
Allahu Maulana Ali, 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 Allahu Maulana Ali. Shukran lillah walhamdulillah. Shukran lillah walhamdulillah. Ya Ali Madad Aziz sir. یا علی مدد یا علی مدد بہت خوب بہت ہی اچھا سبحان اللہ بہت نوازش تمام ساتھیوں کو یا علی مدد thank you for joining us this morning inshallah with Imam's help Imam's mercy we will continue on our Farman of Baitul Khayal Mulaqat Toronto Canada November 19th 2017 inshallah نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام یا مولائے مہربان مدد فرما یا مولائے مہربان مدد فرما یا مولائے مہربان مدد فرما علی القیوم علی اللہ مدد فرما علی القیوم علی اللہ علی القیوم علی اللہ مدد فرما نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام توفیق تائید ہمت و یاری مولا توفیق تائید ہمت و یاری مولا یا مولا مہربان اپنے نور کی مدد اپنے نور کے ذریعے سے ہم غریبوں کی مدد فرما مولا یا مولا مہربان ہمارے قریب آتے ہوئے اپنا دست مبارک ہم غریبوں پر رکھتے ہوئے ہماری دورانی فرما مولا یا مولا مہربان تیری مدد کی اشد ضرورت ہے مولا یا مولا اپنے نور سے ہماری ہدایت فرما Please recite the holy salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. We had stopped at this point where Imam is guiding us on how when one experiences the spiritual enlightenment, he would not be able to describe to others as those of others who have never experienced this spiritual enlightenment would not be able to understand. So in that case, do not share this experience. Allah says, because those who have never been touched cannot understand what it is to be touched by this light. Because it has not happened to them. So if you tell them, few things will happen. One, they will not understand. Second, they may look at you and say that is a lie. Third,
They may doubt you as someone who is just saying things, and next time you will lose your confidence, and there is a chance that you will not have the experience of the light again. And then lastly, which Imam talks about in this very Farman, that you will lose the humility, ajizi, that it is required to move forward in the spiritual world. यहाँ पर थोड़ा सा उर्दू के अंदर बताता चलो कि जब इमाम ने फरमाया कि ये एक ऐसा अनोबा होगा कि जो आपने पहले कभी भी नहीं किया होगा, और ये बहुत ही इनफिरादी होगा, और अगर आप इसको बताने की कोशिश करेंगे तो वो लोग जिन्होंने इसको कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया है, इसका उनको कोई भी इदराक नहीं है, वो कभी भी इस बात को नहीं समझ पाएंगे, और उसके बहुत सारे नुकसानात हैं, जैसा कि वो आपको झूठा समझने लगेंगे, वो आपको एक ऐसा इंसान समझेंगे कि जो सिर्फ बातें करता है, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस टूट जाएगा, जिसकी वजह से आप इबादत में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और आखिर में जो इसी फरमान में मौला ने फरमाया है कि इबादत के अंदर आजीजी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और वो आजीजी आपसे चले जाएंगी क्योंकि आपने उसको शो ऑफ कर दिया है, आपने अपने आप को दूसरों से बेहतर और बड़ा मान लिया है, जिसकी वजह से आजिजी का दामन छूट जाएगा, जिसकी हमें बहुत जरूरत है रूहानियत के अंदर आगे बढ़ने के लिए। इन वजूहात की बिना पर आपका ये एक्सपीरियंस आप अपने पास रखें। मौला आगे फरमाते हैं, but keep that as a special privilege and happiness. It is yours, it belongs to you, do not share. Islam is generous, but in this case, don't share. Don't share it. So keep that special happiness to yourself. Even though in Islam we are taught, that is part of ethic of Islam, that you're supposed to share what you have. But until and unless someone who has izn, amar, permission, in example, our dais and peers, Arifine Zaman, they have shared their spiritual experiences because they have permission, izn, amar to do so, to motivate and teach others. And we can see our ginans are full of it. The books of our Dayan and Ujatan are full of their spiritual experiences. But who can see that in the Ginan? Who could see that in the books of our Dayan and Hujatan and Arifane Zaman? Only those who would pay attention to it. Otherwise, to them, that is just some words, Ginan, of a past. They will take that as part of a
history lesson instead of part of a spiritual experience. So inshallah, Imam Mercy is with us, and we will individually succeed in this journey, and collectively we will continue to do ibadat, pray for each other, help each other, and inshallah, each one of us, and that is the wish of the Imam, that we will succeed one time or the other within our lifetime. यानी कि फिलहाल हमें खुद इबादत करके इंडिविजुअली इंफरादी तौर पर इस कामयाबी को हासिल करना है और इसको अपने पास रखना है और आगे बढ़ना है और अपने पास रखना है और आगे बढ़ना है. अगर कभी इमाम का इज़्न हुआ, फरमान हुआ, अमर हुआ, तो उनको अच्छे अल्फाजों में मगरूरी के बगैर हमारे पीरों और दाइयों की तरह अगर मौका हुआ इमाम के फरमान के मुताबिक, अमर के मुताबिक, ख्वाहिश के मुताबिक वो भी शेयर हो सकेगा, लेकिन फिलहाल उसको अपने पास इंडिविजुअली रखें और किसी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि उसमें आपके लिए अच्छा नहीं है. मौला आगे फरमाते हैं, रिमेंबर इट, याद रखना, सीक इट, एंड द बेस्ट वे टू सीक is humility. You see, here comes that word. Remember to seek, but with humility. Because once we disclose, the part of the humility may leave. And that is the danger, that you block yourself from moving forward because you left the part of the humility. मौला फरमाते हैं कि याद रखें कि आपको ये करना है काम, लेकिन आजीजी के साथ, क्योंकि अगर आजीजी का दामन छूट गया तो रूहानियत के अंदर जो आगे बढ़ने की शर्त थी, आजीजी, वो आपके पास नहीं होगी, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे. इसलिए जरूरी है कि हमें याद रखना चाहिए, और स्पेशली हमारे वो भाई बहन, हमारे वो दोस्त जो इस लैंड पर आते हैं, इबादत गुजार भी हैं और आगे जाके इस रिकॉर्डिंग को सुनेंगे भी, हमें याद रखना चाहिए कि हम इबादत के बारे में, सुबह को उठने के बारे में कहीं पर भी उसके अंदर गुरूर ना करें. We just leave that part as our individual task. Do not talk about waking up in the morning, going to Jamaat Khana and all that. Keep humble. Keep your humility. Keep it to yourself, because that is the task, that is the promise between a murid and a murshid. उसको अपने तक रखें, उसके बारे में तस्करा ना करें. You have to keep in mind that this is a matter of a soul, and you do not govern what happened in this context. Another very good principle to remember, that you do not decide. You do not govern this. You cannot say, I should have this, I should have this, I must have this. That is not the case. What happened in this context is up to the Imam. Your part is to follow the Farman, follow your promise, to come and do the Ibadat.
that is the part of the moment. Let Imam do his part. He knows when it is time for you as an individual murid to have that light, and let him be that judge. Let him be that merciful Imam. Let him do that. We do our part, let him do his part. We do not govern, we do not demand. आप समझ गए हैं कि इसके अंदर जो ह्यूमिलिटी की है, आजीजी जो है, उसमें हमको सिर्फ अपना वादा निभाना है और खामोशी से बैठना है। बाकी का काम इमाम का है और इमाम पर छोड़ दें। आप नहीं कह सकते हैं कि चूंकि मैं इबादत करता हूं, जरूरी है कि मुझे कुछ उसके अंदर से मिले और रोशनी नजर आए और मेरी रूहानी तरक्की हो और मैं इमाम में फना हो जाऊं। ये तमाम चीजें ख्वाहिशात तो हो सकती है, डिमांड नहीं हो सकता है, क्योंकि ये पार्ट जो है वो इमाम का पार्ट है और हम इमाम से जबरदस्ती डिमांड नहीं कर सकते हैं कि चूंकि मैंने इबादत की है तो मुझे ये मिलना ही चाहिए। ये पार्ट नहीं है यहाँ पर। उसकी रहमत के ऊपर उसको छोड़ा जाए। यू आर सीकिंग, यू आर नॉट टेकिंग। आप उसको ढूंढ रहे हैं, आप उसको ले नहीं रहे हैं। समझ गए ना? जबरदस्ती नहीं कर सकते आप। यू सीक एंड यू सिट। So Mullah saying, you are seeking, you are not taking. I want my spiritual children to understand that if you sit in humility, seeking that light, inshallah, every one of you will, every one of you will highlight this part. This is what Imam wish. Every one of you will one day be successful. That is my wish, that is my prayer, and that is my blessing to each one of you. You see that? Imam wish is for us to have that nur, that light, that experience, that enlightenment. That is what Imam wants. And what he wants us to do is just sit in humility. That's it. That's all he's asking us to do. Let him do his part. Keep your heart open, keep the door open to the light. And that's how Imam, inshallah, one day each one of us, every one of us, will have that happiness, that enlightenment, that light. Because that is the wish and the prayers and the blessing of the Imam on each one of us individually. आपने देखा है इमाम क्या फरमाते हैं? आप सिर्फ आकर हम्बल तरीके से आजीजी के साथ बैठे और बाकी काम मेरे पर छोड़ दें। आप में से हर एक को एक दिन ये खुशी नसीब होगी, ये कामयाबी नसीब होगी। मौला फरमाते हैं, ये मेरी ख्वाहिश है, ये मेरी दुआ है और ये मेरे खाना वदान है आप सबके लिए, ईच वन ऑफ यू, सबके लिए। खाली हमें क्या करना है? जाकर आजीजी के साथ बैठना है, बाकी का काम इमाम के ऊपर छोड़ देना है, इंशाल्लाह। And that part that every one of you will
That's a definite, not a maybe, not a perhaps, maybe some of you. Is not that. Imam want every one of us to have this happiness. That is the wish and the will and the prayer and the blessing of the Imam on each one of us. Now, this is the part that I love, and we have been preaching for a long time regarding the Ibadat and Baitul Khyal and Isme Azam, and why it is so important for each Ismaili when they are ready to do so. And let's read this paragraph and see all of these sessions and lectures are according to this Farman. According to this Farman. When I look at my spiritual children here, I am deeply happy to know that you are willing to give time to search for your spiritual happiness. I know that it is difficult to sit early in the morning. It is difficult to do that. But on the other hand, the Imam is saying to his spiritual children, I want you to practice Baitul Khyal with the best opportunity of success. So here, two parts to understand. When we go to Imam and seek Isme Azam, it makes our Imam happy. It makes our Imam happy. Because what good would it do that we are born in such a tariqah where Imam is living and present? Only tariqah in the world where Imam is living and present. On top of that, only one tariqah where Isme Azam is given with the blessing of the Imam of the time, directly, directly to the Murid. Only in Ismaili tariqah. And if we are born Ismaili, or somehow we have become Ismaili, and we are at that age where we can take the opportunity and have success for our soul, elevation of our soul. And if we decide to do that, then that makes Imam happy. That makes Imam happy. That we are thinking of our soul and our end. We are not busy with our physical and something which has no end. It's just temporary and it will go away. We should be thinking about the soul which has a good, happy ending. All life we run after the material without thinking of the soul. I don't think it would make Imam happy, because at the end we are dependent on others to pray for us, to pray for the Rouhani. So what we are saying, I'm not going to do anything for my soul, and when I die, I want my Jamaat, my friend, my family to pray for me and for my spiritual elevation. In the other hand, Imam is saying that when you come to me and when you are willing
to give this time for the sake of your spiritual enlightenment, for your spiritual elevation. That makes me happy. As an smiley, I don't know if there is any smiley who would say that I don't want to make my Imam happy. I don't know any smiley would say that. Every one of us want to make our Imam happy. And Imam is saying, it makes me happy when I see my spiritual children enroll themselves into the Bethel Khel and dedicate their time 1 hour to the elevation, enlightenment of their soul. That makes Imam happy. And therefore, it is very important if we are at the age and if we can, then we should take the Ismi Azam and definitely we should do Ibadat every day, just like we perform our dua every day. We give that 1 hour to the Ibadat, inshallah. Now, let's read further. अगर कोई सवाल हो तो फिर पूछ लेना कि इमाम की खुशी इस बात में है कि हम अपने आप को बैतुल ख्याल में इनरोल करके और इबादत में बैठने की तमन्ना करते हैं, ख्वाहिश करते हैं और फिर इबादत के लिए उठते हैं। जिस तरह से रोजाना दुआ पढ़ते हैं, इस तरह से कभी भी इबादत को मिस नहीं करते हैं। और सुबह की इबादत के लिए मौला ने फरमाया है कि ये सबसे बेस्ट टाइम होता है इबादत करने का, जो आपको दिया गया है 4 से 5। इसके अलावा जो आप करते हैं वो नवाफिल में गिना जा सकता है, लेकिन इस वक्त इबादत जरूरी है, इंशाल्लाह। And that is why you sit in bandagi early in the morning. It is the time when most worldly matters are away from you and you can concentrate on the ball. क्योंकि ये वो वक्त है जब इंशाल्लाह दुनिया के कामकाज शोर शराबा मिनिमम लेवल पर है। At that time, everything has quiet down, so hopefully you can sit in peace, and that is the best time to perform and have a continue connection in the ibadat with your ball, inshallah. With that, Imam gave blessing. I give you special blessing, all of you, for the success in Bandagi. Ameen. Khana Vadan, Khana Vadan, Khana Vadan. Ameen. When you sit, you are seeking to, to come close and closer and closer and closer and closer to He who is above everything. Very, very important part for us to understand that Imam is inviting us, calling on us to go behind the physical and seek the Noor-e-Ilahi, which is in the Imam. You are not looking for the didar, a physical didar of the Imam, but you are seeking to have Nurani didar. You are seeking to come closer to the Hakikat, closer to the Nur, which is above everything. You are trying to
seek the Noor, which is above everything else, above physical, above your imagination, anything you can think of, He is above that. And that is what we are seeking. Second lesson in this one line of Farman. When Imam repeats, come close, closer, 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 and closer, 5 times. What Imam is saying, when you have your first experience, when you have your second experience, when you have your third experience, when you have your fourth experience, you will come closer and closer and closer and closer to the Nur of the Imam Noor-e Ilahi in stages, step by step, दर्जा वार, एक एक सीढ़ी करके आप नूर के करीब आए और करीब आए और करीब आए और करीब आए. First बोला से come close, now come closer and closer and closer and closer. That shows that in the ibadat there are ranks, darjat. Step by step is not the very first day or the very first time you have this experience that is the end of it. No, that is just the beginning of it. ऐसा नहीं है कि पहली मर्तबा कोई झलक नजर आई नूर की रोशनी की तो वो हम पहुंच गए हैं. नहीं, वो तो सिर्फ एक आगाज है. अब आपको और करीब जाना है और करीब जाना है और करीब जाना है और करीब जाना है. यहाँ पर हमें पता चलता है कि नूर और नूरानी एक्सपीरियंस के अंदर भी दर्जात होते हैं, स्टेप्स होते हैं, सीढ़ियां होती है और हमको करीब से करीब से करीब से करीब जाना है उस नूर के और इंशाल्लाह एक दिन उस नूर में फना हो जाना है. एंड इंशाल्लाह वन डे we will become one with the Noor. That is our goal, to be Fana fi Imam. So you are looking for enlightenment, but it is not an enlightenment of this world. आप वो रूहानी खुशी और समझ चाहते हैं जो कोई भी दुनियावी समझ के बराबर नहीं है. आपने जो भी सोचा है उससे बढ़कर है ये. Whatever you have in your mind, it is different and is above that. It is a different enlightenment. And I am certain as you as your Imam that if you are successful, you will know it. It is a different enlightenment, and I am certain as your Imam that if you are successful, you will know it. But as I have said, keep that as your personal treasure. मौला फरमाते हैं कि ये वो एक्सपीरियंस है कि जब आपको ये खुशी टच करेंगी, छुएंगी, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास क्या आया है, क्या आपको मिला है, कौन सी खुशी आपको मिली है. और ये खुशी आप अपने पास रखना. Keep that to yourself because that is your personal treasure. Don't share it. Don't not try to share it. Don't gossip about it. And keep that light with you for your personal happiness in your everyday lives. Keep it to yourself.
This is yours for the rest of your life. अब इस खुशी को, इस नूर को अपने पास रखें, क्योंकि ये आपके लिए है ذاتی طور पर और पूरी जिंदगी के लिए है, ये रोजाना के लिए है ये. And I give you special blessing for success in your bandagi. Again, Imam want us to have this blessing and this happiness. So again, he want to give us a special blessing for the success in the ibadat. Khana Vadan, Khana Vadan, Khana Vadan. Ameen. You are entering into the Betul Khyal. In one of Nachi's session, I had mentioned this, and there were a lot of questions at that time, because we are talking about the early time, very early time. Now we've been together as a Ilmi group for years now. But if you recall that session 3-4 years ago, where I had mentioned this, that not only one time, but Imam wants to give you bowl every time, every time. And there were questions, but this is not what we are told. And my answer to that was, I only follow Imam's Farman. I will not tell you anything outside the Farman. Because Imam's Farman is what we follow as a murid. So let's take a look at this today. And I believe this is the last paragraph of today's Farman. And see what you get out of this one paragraph. And if I was wrong, do tell. And if you believe in this Farman, and then do what you need to do whenever it is possible to do. पहले मैं इसको एक्सप्लेन करता चलूं. अभी तक मैंने फरमान को पढ़ना शुरू नहीं किया है कि कुछ अरसा कबल जब हम शुरू में इन क्लासेस को जारी किए थे, तो नाचीज ने इस फरमान और इस अमर की तरफ, इस सच्चाई की तरफ तवज्जो दिलाई थी दोस्तों की, और कहा था कि जब भी इमाम बैतुल ख्याल का बोल देने आए, आप जाएं, लें, बोल लें इमाम से. जब जब मौला आए, जब जब आपके पास मौका हो, क्योंकि बोल के साथ जो दुआ आशीष मिलती है, जो खाना वदान मिलते हैं, जो दीदार मिलता है, वो हमारे लिए बरकत का बाइस होता है. और हम ये कहते हैं कि या मौला, हम तेरी दुआ आशीष के ख्वाहिशमंद हैं, और इस वजह से बार बार जाना चाहिए, इंतजार नहीं करना चाहिए, जब भी मौका हो जाना चाहिए. और आप कहेंगे कि लेकिन हमें और कुछ कहा जाता है, तो नाचीज ने आपको याद दिलाया था कि हम सिर्फ इमाम के फरमान के मुताबिक चलते हैं. हम इमाम के मुरीद हैं, तो हम इमाम के फरमान को मानते हैं, ना कि दूसरे क्या कहते हैं. हम आपको कभी भी वो बात नहीं कहेंगे जो फरमान से बाहर होगी. सिर्फ फरमान के अंदर होगी, वही बात होगी, और कुछ भी नहीं होगा. कभी भी फरमान के बार बात नहीं करेंगे हम. आए इस आखिरी पैराग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं अभी. लेट्स कम and see what Imam is saying and what Imam wants from us. Let me read the entire paragraph first. You are entering into the Baitul Khayal, but later on in the life,
I will give you another bowl. As time goes by, and when I'm next with you, I look forward to giving you a new bowl. And I want you to come closer and closer and closer to me in the spiritual life that we we have. Not you have, we have. In the spiritual life we have. Kanavadan, Kanavadan, Kanavadan. Did you hear that? Are you listening to what Mola Baba wants? What is Mola Baba's Farman is? What Mola Baba wish for you? Imam is clearly saying that I'm here and you are here. You are entering into Bethel Kyal. But later on in your life, I will give you another bowl. When I come, and if you come, I'm looking forward to give you a new bowl. In one of the other Farman in Karachi, Imam says that when I come, and if you come, I will give you another bowl. And then Imam repeats. And then again, when I come back, and Imam used the word if you come back, I will give you yet another bowl. Here, look at this again. But later in life, I will give you another bowl. As time goes by, and when I am next with you, I look forward to give you a new bowl. No condition. Imam is not putting any condition on you. Just come. When I'm here, come, Mullah says. Come. I will give you another bowl. Do not listen to anyone who tells you don't go for the bowl. This is what Imams want, and we're supposed to follow Imam's Farman. And look at this last line. If it does not give you goosebump, then I think you are sleeping. Wake up. You should get a goosebump from this. Listen what Imam is saying. In the spiritual lives that we have, Imam is saying, we come closer and closer and closer to me. If that does not wake you up, I don't know what will. Imam is very clear in his farman, in his wish, and his want. He want you as individual murids who have enrolled themselves into the Bethel Kyal to come closer and closer and closer. Every time Imam comes, he wants to give you a new bowl. Take the screenshot of this. Keep it in your phone. If anyone ever tells you otherwise, take this screenshot. Have it in your phone. And remember this farman. Remember this farman. This is the wish and the will of the Imam. यहाँ पर मैं आपको दोबारा से बताता चलूं और कोशिश करता हूं लाइन बाय लाइन उर्दू के अंदर बताने की। इमाम फरमाते हैं कि जब आप बैतुल ख्याल में दाखिल होने के लिए आए हो, जिस तरह से आज, इंशाल्लाह आपकी जिंदगी में जब दोबारा मैं आऊंगा तो आपको एक और बोल दूंगा, और फिर दोबारा जब मैं आऊंगा और अगर आप आते हैं तो मैं आपको एक और बोल दूंगा। और उसके आगे मौला फरमाते हैं कि मैं उस दिन का इंतजार करता हूं कि जब मैं आऊंगा और आप भी आएंगे, मैं आपको एक बोल दूंगा।
I look forward to it. ये अल्फाज इंग्लिश में मौला फरमाते हैं कि मैं उस दिन का इंतजार करूंगा और आपको एक नया बोल दूंगा। हम किसी वजह से, जो भी वजह है, हम इमाम की इस ब्लेसिंग को लेने के लिए या तो तैयार नहीं है या हमें अलग से समझाया जाता है। याद रखें, हम इमाम के फरमान को मानते हैं। आखिर में मौला पता है क्या फरमाते हैं? आप करीब आए, करीब आए, करीब आए, मेरे से करीब आ जाए, क्योंकि हम रूहानियत के अंदर एक साथ जी रहे हैं। हमारी रूहानियत जो है ना, मुला फरमाते हैं, मुला अपने आप को आपके साथ जोड़ रहा है कि हम रूहानियत में एक साथ है, करीब है। आप और करीब आ जाए, हम एक साथ है। ऐसा नहीं कि आप अलग है और मैं अलग हूं, हम एक साथ है। मौला फरमाते हैं, I want you to come closer and closer and closer to me in this spiritual life that we have, जो हमारी है। हम एक साथ है वहां पर। खाना वदान, खाना वदान, खाना वदान। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। यहाँ पर इस फरमान का पूरा होता है। इंशाल्लाह आज का सेशन हमारे लिए बहुत ही कामयाब और सोचने के लिए बहुत सारा मवाद है हमारे पास। So we will stop here. Inshallah, we have lot of things to think and appreciate. Be शुक्रगुजार for this. जी, do we have any comments or question now? Subhanallah, sir, Subhanallah. Sir, we have a couple of questions from the last week when the session was ended due to some technical difficulties. So we have one question from a friend. You are describing it so simply that we can understand, but one always wonders that when someone explains it, does that mean it is their experience or is this evidence-based explanation? I don't think I fully understand the question, but remember, Imam's Farman is so clear and simple. Imam's Farman is so clear and simple. When we read Imam's Farman with an open heart, and when that Farman touches your heart, you would have no doubt, no short understanding what Imam wants from us. So what this Garib and Nachi is doing is just simply, in your word, explaining what Imam is saying to us. I'm just drawing our attention to the words of this Farman. I love this Farman. I don't know if anyone remember, we have done this Farman before. This is not the first time we have taken this Farman. But this Farman have touched my heart and has touched the heart of the many friends on this line. So when it was requested, of course, we always hear and help in any manner possible. So only thing we are doing, my friend, is that we are taking the Farman with open heart and trying to read and asking Imam's help. So may this Farman touch our heart. And looks like it must have touched your heart as well, inshallah. Ji. Sir, we had another question from last week. Is there a difference when Imam says, "Come closer to the Nur of Imam" and "Come closer to He who is above all else"? All right. So there are two ways to understand this.
Another very good question, but easy to understand. Because there are darjat, there are ranks, there are steps in the Ruhaniyat. And as we come into the Ruhani spiritual world, we notice that there are different ranks. So what Imam is teaching here, that it is not the physical me, but the Ruhani, Nurani, the Nur in the Imam. And that Nur and understanding of that Nur are on the different levels. What I want you to do, Imam is saying, that come closer and the closer and the closer and the closer to the one who is above all else. Don't stop here. Go further, 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 and further. Imam wants you to go all the way to the highest level of Nurani enlightenment, understanding. In other words, in our simple language, don't just touch the water. No, first level, Mafi. Don't just see the Nur. Don't just touch the Nur. Don't just walk into the Nur, but to jump into the Nur, meaning become one with the Nur, become one with the Imam, what we call Fanafi Imam. That is the Dawat. So you see, there are 4 stages. You can just see it, you can just touch it, you can walk into it, or you can become one with it. That is the Dawat. See, Imam wants you to go all the way. Don't stop here. Unfortunately, due to the lack of knowledge, sometimes when a Momin, a Murid, a Jamati member, when they have first light experience, they get so happy, which is reasonable, but then they forget that there are other stages after that. And Imam is reminding them that there are other stages after that. And that is what Imam is saying. Very good question. Thank you for asking. G. Okay, friends, you can share some questions in the chat. Okay. Or you can unmute your device and you can ask the question. Okay, so I think friends are asking if you can explain in Urdu, please. जी, तो 2 सवाल ऊपर आए थे कि किस तरह से हमें ये सारे फरामीन आप बता रहे हैं। तो नाचीज ने अर्ज किया कि इमाम के फरामीन बहुत ही वाजे और आसान है। अगर हम अपना दिल और दिमाग को खोलकर उसको पढ़ते हैं, तब उसके अंदर से हमें एक रूहानी इंस्पिरेशन या एक अच्छी तरह से गाइडेंस मिलती है। उसके अलावा जब इमाम फरमाते हैं कि आप और मेरे करीब आए और मेरे करीब आए और वहां तक पहुंचे जो सबसे ऊपर है, तो यहाँ पर इमाम हमें दावत दे रहे हैं कि रूहानियत के अंदर अलग अलग दर्जात हैं। यानी कि रूहानियत एक सफर है। जब पहली मर्तबा किसी को नूर की रोशनी या खुशी हासिल हो, तो उस मकाम पर वो ठहरना चाहे। कभी कभार हम उस खुशी में भूल जाते हैं, जब हमें पहली मर्तबा कोई खुशी नसीब होती है कि उससे आगे भी कुछ है, और हम भूल कर वहां बैठ जाते हैं और उस खुशी को अल्टीमेटली फाइनल खुशी समझते हैं, जबकि उससे आगे और एक लंबा सफर है।
تو روحانیت کے اندر ہم نے اس کو 4 کے اندر ڈیوائڈ کیا، چونکہ مولا نے اس کو 4 مرتبہ کلوزر 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 فرمایا تھا کہ پہلے نور کو دیکھنا، پھر نور کو چھونا، پھر نور کے اندر چلنا، اور پھر نور کے اندر ایک ہو جانا. یہ 4 سٹیجز ہے نور کے اندر، یعنی کہ روحانیت کے اندر. نور سے مراد روحانیت کے اندر. اور آخر میں ایک بندہ فنا فی امام وہ جاتا ہے. یہاں پر امام یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ آپ رکنا نہیں، اس سفر کے اندر رکنا نہیں ہے، اس کے اندر چلنا ہے، اس کے اندر آگے بڑھنا ہے، اور آگے جانا ہے، اور آگے جانا ہے، اور آگے جانا ہے. جی Okay, so we don't have any question. Friends, you can unmute your device if you have any questions. Sir, یا علی مدد. وہ لاسٹ والی جو فرمان کی لائن ہے نا کہ جی لیڈ دیٹ سوری ان دا اسپرچل لائف دیٹ وی ہیو، سر اس کو پلیز اور سمجھائیے. جی جی تو میں 2 لائن اوپر سے اس کو لیتا ہوں کہ جہاں پر مولا فرماتے ہیں کہ آپ قریب آئیں اور قریب آئیں اور قریب آئیں اس مقام تک جہاں پر ہماری، مولا فرماتے ہیں کہ میں اور آپ جہاں ہماری روحانی زندگی ہے وہاں تک آپ قریب آ جائیں، کہ جہاں پر ہم دونوں، یعنی مولا کیا فرماتے ہیں، ہم دونوں ایک ساتھ ایک روحانی زندگی جیئیں گے. اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم خالی اس کو ٹچ کر کے پھر چھوڑ دیں، یا اس کو تھوڑا سا چل کے پھر اس کو چھوڑ دیں. مولا فرماتے ہیں نہیں، اب وہاں تک آئیں جہاں پر ہم دونوں، یعنی کہ آپ فنا فی امام ہو جائیں، جہاں پر ہماری ایک ساتھ روحانی زندگی ہے، وہاں پر ہم ایک ساتھ روحانی طور پر ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائیں گے اور جیئیں گے. جس طرح سے ہم امام کے لیے کہتے ہیں نا کہ امام کبھی مرتا نہیں ہے، امام دنیا میں ہمیشہ قائم اور دائم ہے. آپ کو پتا ہے مولا کیا فرماتے ہیں، اگر آپ میرے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں نا تو آپ بھی میرے ساتھ ہمیشہ دنیا میں رہیں گے، قائم اور دائم، کبھی بھی نہیں مریں گے، کیونکہ ہماری روحانی زندگی ایک ساتھ ہے، جڑی ہوئی ہے ایک دوسرے سے. یہ مولا فرما رہے ہیں یہاں پر، اور یہ بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی اوپر کا فرمان ہے. ہم اس فرمان کو ذرا بھی لائٹلی نہ لیں، بلکہ ناچیز نے پہلے کہا کہ آپ اس کو اردو کے اندر اگر لکھنا چاہیں تو اردو کے اندر اس ایک پیراگراف کو لکھ لیں، تاکہ آپ کو کبھی بھی کوئی نہ بولے کہ آپ کو یہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ آپ کو صرف اور صرف امام کے فرمان کو ماننا ہے. اور امام کیا کہتے ہیں، آپ آئیں، آپ آئیں، جتنے مرتبہ میں آؤں آپ بھی آئیں، میں آپ کو نیا بول دوں گا، میں آپ کو اور کھانا بدان دوں گا، ایک اور دعا آشیش دوں گا، میں آپ کو اور اپنے قریب لے آؤں گا. آپ آئیں اور اتنے قریب آ جائیں، اتنے قریب آ جائیں، اتنے قریب آ جائیں کہ آپ کی روحانی زندگی اور میری روحانی زندگی میں کوئی فرق نہ رہے. اس سے زیادہ امام ہم کو کیا خوشی اور دورانی دے سکتا ہے. اتنا واضح فرمان ہے یہ. آپ اس کو اسکرین شاٹ لے لیں اور اس کو اردو کے اندر آپ چاہیں تو لکھ لیں، گجراتی کے اندر لکھ لیں، جو بھی آپ کی لینگویج ہے اس کے اندر لکھ لیں آپ، تاکہ کبھی بھی بھول نہ جائیں ہم. جی تو سر یہ جو 3 چیز آپ بولے نا کہ ان کو دیکھنا، چھونا اور پھر اس میں چلنا، تو وہاں سے پھر غلطی ہونے کے چانس ہے، مطلب پورا جب ہاں تک ہم تیار نہیں ہوتے تو پھر جی، ہم مطلب تو غلطی کے چانسز نہیں ہے، کیا کہتے ہیں ہم، انجانے میں غلطی ہو جاتی ہے.
जिस तरह से नाचीज ने अर्ज की कि जब हमें पहली खुशी मिलती है, पहली जो झलक नजर आती है, तो हम क्या समझते हैं कि ये हमको नूर मिल गया और बस खत्म। उस खुशी में वो भूल जाता है कि उसको और भी आगे बढ़ना है, तो वो अनजाने में ये गलती कर बैठता है। इसकी वजह क्या है कि उन्होंने कभी भी इल्म को नहीं सीखा, क्योंकि इल्म के बगैर रूहानियत के अंदर आगे बढ़ना ऐसा होगा जैसा समझ के बगैर है हम। जब हमको पता ही नहीं है कि आगे कुछ है, तो हम आगे क्यों जाएंगे? चूंकि अभी हमने इसको पढ़ लिया, हमने सुन लिया, हमने समझ लिया, अब हमारे लिए ये मौका है कि हम पहली लाइट, फिर दूसरी, फिर तीसरी और फिर चौथी, यानी कि फनाफी इमाम तक हम पहुंच जाएं, क्योंकि हमको पता है हमको रुकना नहीं है, हमको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। और ये हर एक को पता नहीं होता है। आपको क्यों पता है? क्योंकि आपने इस दरस को सीखा है। The reason that we know, because we paid attention, we gave our time, we learned and we listened, and inshallah we will remember that we need to move forward, forward and forward, closer, closer and closer. Ji. Thank you, sir. ALWAAZ. Thank you. Yes. So I think friends are asking if you can repeat in English. Ji, yes, definitely. It's very important, and that is good to know every single word and understanding. What I was telling my sister, that sometime, because we never had this kind of spiritual happiness, when the Noor touch us the very first time, within ourselves we are so happy and so pleased that we forget that this is a spiritual journey and do not stop. But we forget that. How do we forget that? Did we make a mistake? No, we forgot because we never learned. We were doing the ibadat, but we never learned that there are stages, and the ibadat and the spiritual world is also a journey. And therefore, sometime, unfortunately, they stop. So do not stop. So those of us who have given our time, our sleep, and have taken the effort to learn, we would know when this nur, this happiness will touch us initially. That is not the end of it. Matter of fact, that is the beginning of it. And the spiritual journey is beautiful, because just seeing the water is not good enough. You do want to touch their water. You wanted to feel their water. Just like that, just seeing the nur is not good enough. You wanted to touch it. You wanted to feel it. You wanted to walk in it. You wanted to dive in it. You wanted to go further and further and further. You wanted to come closer and closer and closer to the highest level of understanding in the Nur. And at that point, Imam is saying, when you come to me at that level, you and me will be living together. In our spiritual life, we will be together as one unit, as a mono reality, as Fanafi Imam. As Imam never dies, you will never die, because now you are alive in me. This is our life, spiritual life now, together as one unit. And I was telling her, take this screenshot, remember this Farman, never let go of this Farman, because this is what Imam wants from you. And Imam is willing to give you that opportunity. Subhanallah.
जी। Sir, friends asking, please advise how to reach ultimate humility, which Hazir Imam stresses. Okay. I don't know about ultimate humility, but just like anything, of course, we have to have humility, number one, in our daily life. How humble are you in your daily life? When you talk to other, how do you show off to other? That is your first test, point of reflection. How do you behave in your common daily life? If you don't think you are a humble person, then you already have a problem, right? You need to start from there. Start from your daily, the way you speak to your family, your friends, your co-worker, wherever you are. How much and how humble are you? If that is good, if you are comfortable, then come to Jamaat Khana. When you go to Jamaat Khana, and I have said this many times, how many times do you tell others, oh, I go to Jamaat Khana every day. Oh, I'm in Jamaat Khana 50 minutes early. I wake up early in the morning. I never miss the Jamaat Khana. How many times have you said that to your friends, your family? And as a jokingly, as a light-hearted joke, I always use this uh, conversation between two women. If you like, I can repeat one more time because it's just a light-hearted joke, but a big lesson in that. બેન આજે કેમ તમે આટલા થાકેલા થાકેલા નજર આવો છો? અરે હું શું કહું બેન, હું સવારના બહુ જલ્દી ઉઠીને ઇબાદત કરવા જાઉં ને તો હું થાકી જાઉં છું. Do you see that? She was not asked that did you go to Jamaat Khana, do you do ibadat? But as soon as she has opportunity, she revealed that she stays tired or she look tired because she wake up so early in the morning. We should never do that. We should never do that because that's showing off. You could have simply answered that, oh, today I'm a little bit tired, but I will take a nap later on, and inshallah, I will be okay. Or you can have made any other excuse, but instead, you said, because I go to ibadat, I wake up early in the morning, so I am tired. Show off. You lost your humility. You lost your humbleness. Don't we do that? All of us. The story was amongst two women, but we all do that. That's how you lose your humility. And then when you go in the morning, and this is another fact, and when you see your friends in Jamaat Khana every day, one day they don't show up. What do you do next morning? Be honest, okay? Oh, my friend, hey, bhai, hey, Ben, tu kale kem noti heavy Jamaat Khana? You know what you're doing? By asking that friend why you did not come yesterday, actually you are saying, I was here and you were not here. You lost your humility again. See, sometimes we do this naively without even thinking, giving second thought. But remember that we need to stay humble. We do not get involved in the conversation. Stay humble. Stay humble. And then, last one, when you sit in ibadat, don't think that because you are sitting in ibadat, you are doing a favor to the Imam and now you deserve
to have that light. Be humble. Ya Mola, I am just a Garib and Nachiz, humble murid. I'm going to sit here. I'm going to try my best to concentrate on the bowl. I will try to stay focused, and I will leave rest to you, as you are my master, my Mola. I do not deserve anything. I do not demand anything. I'm just here to remember you in your love. And that's it. Stay in humility. How many sajda do you give before the ibadat? Be honest. Because if we are not honest to ourselves, we cannot improve ourselves. How many times do you give sajda before the ibadat? If your answer is 0 or your answer is 1, when Mukhi Sahib call and give the dua, most people, when Mukhi Sahib is giving dua, they are sitting and their hands up. That is the time you should be in sajda. Go in sajda. So the Mukhi Sahib will give you the dua in humility. You see, there are so many ways you can become humble. Do not show off. Stay humble. Once it goes dark, the lights are off, go in sajda again. Give a sajda. Show your humility to the Imam. Tell Imam, I'm nothing. I'm on your feet. I'm nothing. Show your humility in sajda. See, so many ways you can become more and more humble, because humility can be adapted, can be learned. Inshallah. But remember the core. Is it in your bone? Is it in you? And how do you learn that? How do you talk amongst your friend, family, on your daily life? How do you behave? If you are not humble there, it's not in your bone, it's not in you. Ji. Ya Ali Madad, Ya Ali Madad. I have a comment. When you said that first time you see the light, जब पहली मर्तबा आपको लाइट या कुछ कलर्स नजर आते हैं या ब्राइटनेस नजर आती है, नूर नजर आता है, तो उसमें खुशी के मारे हम भूल जाते हैं और फिर आगे नहीं बढ़ते हैं. इसके अंदर मेरा कंसर्न ये था कि बहुत मर्तबा ये होता है कि खुशी के अलावा हो सकता है वो शॉकिंग है और वो स्कैरी होता है, मेरा सिर्फ अंदाजा है. तो इस वजह से भी कोई डर सकता है या पीछे हट सकता है थोड़ा सा और सोचने लगता है या उसको कुछ, क्योंकि इल्म और मेंटरशिप के बगैर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है. तो इसके बारे में अगर आप कुछ ज्यादा रोशनी दें इस क्वेश्चन पर या कमेंट पर. ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये कमेंट है. जी, तो मेरे ख्याल में आपने इसका जवाब खुद ही दे दिया कि जब इल्म नहीं होता या इसकी समझ नहीं होती, उसकी वजह से वो एक शख्स वहां पर जाकर रुक जाता है, क्योंकि उसके समझ में नहीं आता है कि इसके बाद क्या. तो ये ना समझ हो सकता है कि आपने अल्फाज यूज किया कि वो आगे जाने से डरता है, या वो खुशी के मारे भूल जाता है, या वो खुशी के मारे ये समझ बैठता है कि बस यही सब कुछ है और मैं डन हो गया हूँ. नाचीज का खुद का एक एक्सपीरियंस है कि एक मर्तबा किसी लेडी ने मुझे कहा कि मैं अब इबादत नहीं करती हूँ. मैंने उसको पूछा कि भाई आप क्यों नहीं करते हैं इबादत? तो उसने कहा कि एक मर्तबा नूर मिल गया, इसके बाद कोई ज्यादा थोड़ी मिलने वाला है. उससे हमें अंदाजा हुआ कि इल्म की कमी होने की वजह से
कभी कभार हम अपना नुकसान कर बैठते हैं। और उसको मैंने इस तरह से समझाया, क्या आपको क्या लगता है हमारे पीर हमारे दाई जो फनाफी इमाम थे, क्या वो इबादत छोड़ देते थे? आपने कभी आरिफों को देखा है? हमारे जमाने के आरिफ को आपने देखा, वो जिंदगी भर इबादत करता था। हमारे भगत जिंदगी भर इबादत करी। तो ऐसा नहीं है कि वहां जाके रुक जाना है, किसी भी मकाम पर जाके रुकना नहीं होता है, उस पर आगे से आगे से आगे बढ़ना होता है, क्योंकि ये तो एक रूहानी सफर है ना। जिस तरह से जिंदगी में भी हम कभी रुकते नहीं है, हम चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, ता क़यामत तक चलते रहते हैं, आखिरी वक्त तक चलते रहते हैं इंशाल्लाह। बहुत अच्छा, बहुत नवाजिश। जी कामड़े साहब, एनी लास्ट कमेंट, लास्ट क्वेश्चन? I think, sir, the friends wants you to put up that screen, so they want to that Farman, so they can take a screenshot. Okay. Okay. And I think, sir, we have one more question in the chat. When we become one with Noor, and you said it is not the end, what is the next journey after we merge? So if we don't die, what we do in that journey? Okay, let me get to the screen. And very interesting question, by the way. I believe this was the one they were looking for, this screen. Okay, very interesting question. So our Dais and Peers and Arifin have written about this. There are 4 initial stages, which we already have talked about. And then there are 3 stages after that. So it's called Fanafi Imam, Baka bi Imam, and Ser fi Allah. All right, let me explain what that means. When you become one with Imam, now you are with him. You may be still in your physical life, your physical body is still there, but by your soul and your intellect, you are with Imam. And then Imam would make you and give you such a life that you will never die. That is called Baka bi Imam. Now you are always living in the Imam. You will never die. As Imam does not die, you will not die. Next one is Ser fi Allah. Now your spiritual journey at the highest level possible begins. Highest level begins. All right. And I can only give you some example, because as Imam says, it's not easy to understand. It's not easy to understand. But we will try to put it in simple words as possible. Once a moment is at that level of spiritual realm, would you not like to have experience how did Mola Bapa became Imam? So what you're gonna do, Serfi Allah, you will live your life with Mola Bapa from the beginning. So you can see how Mola Baba became Imam. And remember, there is no time limit in the spiritual realm, it's timelessness. Then, don't you want to see how Mullah Ali became the witness to the Quran and the witness to the spiritual life of Prophet Muhammad? So what you're gonna do? You're gonna go into Serfillah, right?
You're going to become one with him, and you're going to live your life with him. I told you it's not easy to understand, but I'm trying to put it in a simple, childish language as possible. And on you would want to live a life of Prophet Muhammad. How did he receive his first revelation? What happened in Gar Hira? What inspired him? How did he become from Momin to Natik? Back in Hazrat Isa time, what happened? How did Hazrat Isa was born with the soul of Allah? You wanted to live the life of Maryam. You see, there's a never-ending journey. Never-ending journey. And that is the ultimate goal of a moment. The one we cannot even think of or imagine. We cannot even think or imagine. That's what you will get in your spiritual life. And remember, there is no shortage of time there. It's timelessness. You can have all of this experience without any issue, without any problem. That is called Kulli Marifat. Now you will have total understanding of everything. And this is not the end of it. Okay? There is further more. But for today, I believe I have answered your question. G. Okay, so if you want to take one last question in the chat. Sure, sure. Yes. So friends asking, are we saying we go back in history and relive? Are we going to observe it or relive as a new life with Prophet or Imam and its new reality? So here it sounds like that you are thinking physically. And I believe I did say you will live in them spiritually. So the word relive is not correct in your question because you will come into a space where there is no time. And because of that, you will see, you will learn, you will find out that the time of Ali and Muhammad is still going on in the spiritual world. In the physical world, is over 1400 years. In the spiritual world, it's still going on. See, I told you already, it's not easy to understand. But think about the time and space. Think of your dreams. Think of your thoughts. How can you be here and there at the same time in your dreams and in your thoughts? Now you multiply that a little bit more and you will understand how one can live in other time, in other age, and that life, that moments are still happening in the spiritual world. Because in the spiritual world, there is no past and there is no future. Everything is in present. So Adam is living in present. Hazrat Noah, present. Ibrahim, present. Musa, present. Isa, present. Muhammad, present. Ali, present. Everything is in present. So once you come to that understanding, you will see everything in present. I hope this makes it a little bit more clear. It would be hard to make 100% clear because you have to go into your imagination to understand what was said. Thank you. Good question. So just take that relieve out of your question, and that was a good question. G. So should we stop here, Kamle sir?
जी सर. उर्दू सर. जी उर्दू में समझाए जी. हाँ. हाँ जी जी जी. थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग. आपने शुक्रिया, आपने याद दिला दिया. तो हमारे एक दोस्त ने पूछा कि क्या रूहानियत में जिस तरह से नाचीज ने अर्ज की कि हमको जो भी करना होगा ना, जो भी देखना होगा, वो हम सब कर सकेंगे, सब देख सकेंगे. तो जब हम रूहानियत के उस मकाम पे पहुंचते हैं तो क्या हमारी ख्वाहिश नहीं होगी कि हम देखें कि मौला पापा कैसे बन गए? तो हम क्या करेंगे पता है? हम हाजिर इमाम के अंदर अपने आप को दोबारा से जिंदा करके उसको जिएंगे, उसकी जिंदगी को, और हम देखेंगे कि मौला पापा इमाम कैसे बने, कब इमाम के अंदर नूर आया, कब उसके अंदर मारिफत आई, कब उसके अंदर अमर आया. करते 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 हम कहेंगे अच्छा फिर मौला अली किस तरह से गारे हिरा के अंदर और मोहम्मद के शाहिद बने, जबकि वो जिस्मानी तौर पर तो वहां मौजूद नहीं थे. तो किस तरह से बने वो? क्योंकि वो मकाम दहर का मकाम है, वक्त नागुजरिंदा. क्या कहा? वक्त नागुजरिंदा, जो वक्त गुजरता नहीं है, दहर का मकाम है वो. तो सब वक्त आज ही मौजूद है, क्योंकि रूहानियत के अंदर माजी और फ्यूचर नहीं है, हर चीज प्रेजेंट के अंदर है, अपने जमाने के अंदर ही है. आज ही आदम भी है और बन रहा है और उसकी जर्नी चालू है आज ही रूहानियत के अंदर. जिस्मानी तौर पर वो बहुत पहले आया था, रूहानियत के अंदर वो अभी अभी है, क्योंकि अब वक्त गुजरता नहीं है वहां पर, वो हमेशा एक ही जमाने में हाजिर रहता है. तो आदम भी आज है, हजरत नोवा भी आज है, इब्राहिम भी आज है, मूसा भी आज है, ईसा भी आज है, मोहम्मद भी आज है, अली भी आज है, और हम भी आज है, क्योंकि वहां पर वक्त गुजरता नहीं है. तो ये नाचीज उनको इंग्लिश में समझा रहा था. बहुत नवाजिश, थैंक यू, आपने याद दिलाया. थैंक यू सर, शुक्र मामा. यू थैंक वेलकम. याद है गलत सर. थैंक यू एवरीवन. जी तो आपने कहा हमको इमाम के अंदर जाके लाइक इबादत में सब को एक्सपीरियंस हो गया, इबादत के जरिए ही मालूम होंगे एक्सपीरियंस, जब आप कहते हैं ना कि पना फे इमाम बका भी इमाम. ओके. आपकी आवाज कट कट के आ रही है. आप ये ओके. शायद पूछ रहे हैं कि ये एक्सपीरियंस सारे कहाँ होंगे, ये हाँ पूछ रहे हैं? आपने, जी जी, मतलब आपने कहा ना इमाम के अंदर जाके देख सकते हैं कि इमाम इमाम कैसे बने, मौला अली कैसे विटनेस बने हैं, तो वो सब इबादत के वो हो गया ना. ओके. तो दोबारा से आपको ये दावत दी जाती है कि आप जाहिरी चीज को छोड़कर सोचें इसको, क्योंकि इबादत भी एक जाहिरी एक्शन है. मैं उस मकाम की बात कर रहा हूं जहां पर आपने इबादत पूरी कर ली, जहां पर आप फनाफी इमाम हो गए, जहां पर आप बका भी इमाम हो गए, और उसके बाद सिर्फ अल्लाह के मकाम पर पहुंचे हैं. उस मकाम की मैं बात कर रहा था. आप समझ गए कि आपको 2 मिनट के लिए जाहिरी जिस्म और जाहिरी चीज को छोड़कर अगर इसके बारे में आप सोच सकते हैं तो ही आप इसको समझ पाएंगे, क्योंकि इबादत भी एक जाहिरी एक्शन है. जी. जी तो यानी कि हम आप किसी वक्त भी ये कर सकते हैं, आपका मतलब है बनने का. किसी वक्त भी कर सकते हैं नहीं. तो ओके. यही ना, जब से आप जी एक एक लेवल तक ओके. पहुंच जाएंगे जब ही होगा ना. ये तो मैं आपसे हाँ जी 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 यही ना बोल रहे हैं ना, जब आप ऑफ कोर्स जब आप इमाम के साथ एक हो गए तो फिर आपको सब पता चल जाएगा ना जो इमाम करते हैं. जी. लेकिन उससे आगे भी एक सफर और है, वो हम इमेजिन करना हमारे लिए दुश्वार है, क्योंकि हम क्या समझते हैं कि फनाफी इमाम फिर खत्म. यही सोच रहे हैं ना आप फरजाना, कि फनाफी इमाम के बाद क्या, बस खत्म?
जी जी आपने कहा ना फिर सेल्फ ही अल्लाह। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि फनाफी इमाम आखिरी मकाम नहीं है, जी जी वो फिर वहां से एक और सफर शुरू होता है, अच्छा और उस सफर की मैं बात कर रहा था। ओके और यही ओके नाचिज ने कहा कि ये समझना आसान नहीं है, क्योंकि ये वो सफर की मैं बात कर रहा हूँ कि जो हमारे पीरों, दाइयों, पैगंबरों, इमामों ने तय किए हैं। लेकिन हमारे जमाने के अंदर ही ऐसे आरिफीन वो गुजरे हैं कि जो इस मकाम को जिन्होंने पा लिया है, यानी कि जो फनाफी इमाम से आगे निकल गए हैं, बका भी इमाम से आगे निकलकर सैर फिल्लाह के अंदर चले गए हैं। मैं उस मकाम की बात कर रहा था। और उसके लिए हमें क्या चाहिए जी कि हम 2 मिनट के लिए अपने फिजिकल को हटाकर उसको खाली इमेजिन करें, बस, और कुछ नहीं करना है, खाली सोचना है इसको। जी थैंक यू इंशाल्लाह आस्ते आस्ते सब बात वाजे हो जाएंगी, आस्ते आस्ते इंशाल्लाह। बहुत नवाजिश। थैंक यू एवरीवन। याली मदद, याली मदद, याली मदद, याली याली मदद, Yali याली Madad, sir. Yali Sir, Madad, याली shukran, sir. मदद, alhamdulillah. Yali याली याली Madad, मदद मदद, sir. Yali Madad. याली मदद, याली मदद, Yali Madad, sir. याली मदद, याली मदद।